A very good evening to one and all present here. I am Shriya Gharat, And I am Anubhav. and we hereby extend our gratitude and welcome you all to Tamasha, Enacting Equity, a dramatics event organized by Team Kaizen. NSS IIT Delhi is the IIT Delhi chapter of the National Service Scheme, institutionalized under the Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India. Our sole aim is to motivate people for the benefit of the people in and around IIT Delhi. We share the belief that such activities are always means of great satisfaction and joy. Kaizen is NSS IIT Delhi's annual social extravaganza. Kaizen is a Japanese phrase that translates to constant improvement. It is a venue for acknowledging the constant advances in our society that have been launched and accelerated by the united efforts of all socially engaged student organizations, NGOs, and corporations in India and beyond. Through a variety of initiatives, Kaizen NSS hopes to reach and inspire thousands of residents. Tamasha is another attempt in our endeavor to make this world a better place. It is a dramatics competition for all the movie buffs amongst us who are tired of the problematic depictions shown in movies and give them a chance to recreate their chosen scenes to challenge prevalent narratives and more. Foremost, I would like to invite on stage our guiding light, Professor Samrat Mukhopadhyay. He is the coordinator of NSS IIT Delhi and works in diverse spheres to contribute to the society and make this world a better place to live in. Apart from being an esteemed professor in the textile department, he has been instrumental in guiding and nurturing our whole team for the past 4 years. Please welcome our very own Professor Samrat Mukhopadhyay up on stage to throw some light on the overall functioning of NSS IIT Delhi and to mark the beginning of Tamasha. So, very warm welcome to our esteemed director. We are so happy to have him amongst us. And dear friends of NSS family. So we are on the second day. And by the way, I'm not able to, am I audible to all of you? Okay. And this has become a mandatory question now. So like we are on the second day of Kaizen, and I'll quickly, this was a kind of presentation which I gave yesterday, but since he is there for the first time, I take this opportunity to say what NSS is doing and what NSS has been doing during the COVID times as well, very quickly. So Kaizen is the annual fest where we call social change makers throughout NCR zone or outside to share how they have done their stories, what they have to share for the social change. Other than that, we have competitions where like we enact things of social values. Or as today's event, we have Tamasha where, like conventional scenes in movies, we have asked them to enact it in a social way to say that how different it could have been done. Other than that, there are many ways in which we try to involve students in competition for social relevance. So this was the whole concept of Kaizen, and it has been very rewarding experience after even I took over. The slide is not changing. Now it will change. Yeah, so NSS IIT Delhi works on 5 domains, and we have more than 25 projects on which we work. And
50 plus core team members, and we have more than 15 collaborations so far. And we have a huge number of students in which. So let me just quickly go through the broad areas in which NSS IIT Delhi works. The first is education, where we know that we involve in a lot of education for community people surrounding us, and also we try to conduct classes free of cost in IITs in the evening. And we also take care of like some projects for school kids where IIT Delhi students help them. There is one domain environment where IIT Delhi NSS students have been very active, and because we felt that that is the need of the hour. And so right from waste segregation beans, along with trip to Fendicos, along with taking care of animals and birds on the campus, there are several projects in which we take active part. Health is the next domain where NSS IIT Delhi has been very active. Other than doing blood donation camps and dental checkups, and also sessions on menstrual hygiene, excessive drug abuse, and we have also collaborated with different health agencies to so that the message percolates well. And the other has been society, where I would say that we have been really active, where we know like going to places like old age homes and trying to bring them mainstream, and blanket distribution drives, collection drives, a lot of things. I think this is only a glimpse. And the last has been innovation. So where I would be honest that we have not been that active, or we have not been able to contribute that well. So, but we always have hope. Only one story which I would like to share is that few IS officers once barged to my cabin saying that, Samrat, like there are many Delhi government schools which are lacking in infrastructure. So why can't NSS ideally create a portal where we'll have the repository of furnitures of all the schools, and then we connect to people who would love to donate to those schools. So we created such a portal for the schools in around Delhi, and it has been quite successful where people have donated furniture. So that has been one thing, and we have done few projects which I think will show that. And the happiest part is that this was the only body in IIT which didn't stop in pandemic. So they were, I'm very glad to say, and I'm thankful to all of you in the NSS family, that we didn't stop in the pandemic at all. And there were many things we did, right from online teaching to doing a carbon footprint calculator for all the faculties. Many of the faculties individually mailed me saying that Samrat, it was an eye-opener, that what I really consume. It was a very organic effort from our side. And care packages for people, because many of people went into depression during the pandemic time. So we designed individual care packages for them. And becoming pen pals for old age homes, where we connected with those people trying to say how can they even feel part of the society, and contributing to society by some innovative measures like for the blind youth, for promising students. And another very important thing what NSS IIT Delhi did was trying to create a database for ventilators and whatever is available during the COVID time, so that anybody would like to access, and in the NCR zone like to find something. So we try to create that. We also created an online platform for the LGBTQTA community of IIT Delhi, because they often feel left out. And also like we collaborated with reputed organizations and people. We called them for talks to share stories of upliftment, because one thing we felt was like the morals were going down and down. So moral uplifting was one of the key core areas where NSS IIT Delhi actually tried to focus. And immediately after the COVID, we shifted offline and we collected clothes and sent to an NGO Gunj. And then there are a huge number of construction workers. So we conducted camps with the AIMS doctors to look after them. And we set up e-waste bins on the campus, so that because many professors will mail me that Samrat,
there is no facility of e-waste collection. And also reusable paper boxes in IIT Delhi campus, because otherwise we have seen that people throwing garbage anywhere, plantation of trees, recycle of used plastic bottles, and trip to friendly coast to take care of kids. Adil, do we have that? Adil, do we have that recycled this thing? Sit on the here. And ideated automatic waste dispensers for animals on campus, because one problem we faced was that we put water for all animals and birds on campus, but what we find that they would get dried up, especially in this so much dry weather. So we have tried to create an automatic water dispenser. So Kaizen consists of 25 or more panelists, 6 collaborators, and this time because of COVID, we had a subdued Kaizen, so 7 events, and we have certain partners. And Professor Banerjee was asking that what we exactly do. So this is a platform where like all colleges will come and share their success stories, and we all need to learn from each other. So this is a platform. Yeah, so if you can show that. So this is the water dispenser, a very simple concept. Adi, would you like to explain? And we also will plan to just do a short cover. Adil, can you do the same exercise you did yesterday? You can sit on that. And this is a seat we created out of old discarded plastic bottles. A very this thing and he's a 6 foot odd guy who has to sit on that and prove that it has been made well. And these are the link to and this is the whole NSS family. And I am very happy to share this in front of the director that NSS is one body where you really feel like a family. So I was in BRCA for very long, almost 8 years. And for the last 4 years, I have been associated with NSS. The main difference I cherish is this is really where I feel like a family. So I am thankful to all of you for this feeling. And the way you work actually made me happen this. And this is the opportunity NSS IIT Delhi takes to welcome our new director, Professor Rangan Banerjee. And hopefully he would also give us new challenges to work on, because this is a closed loop and we need to work on real life challenges. I won't claim that we have done much, but we have done few things well. And I just hope that we'll be doing much, much better things in times to come. Thanks again. And I again take this opportunity to welcome the new director. Thank you, sir, for your valuable words, and I'm sure it has reached to everyone present here. Now I would request our Co-General Secretary Adil Agarwal to honor Professor Mukhopadhyay with a bouquet. We are extremely fortunate to have with us Professor Rangan Banerjee, Director of IIT Delhi. Professor Rangan Banerjee served as Forbes Marshall Chair Professor in the Department of Energy Science and Engineering of IIT Bombay before he joined as a director at our esteemed institute February this year. It gives me immense pleasure to invite Professor Rangan Banerjee to share his thoughts and blessings with us here today. Good evening. It's a great pleasure. There's an echo. It's fine.
because of these two mics. Okay. So it's so good to see all of you here, and especially to see all our IIT Delhi students working for social causes. One of the things that we want is we want to create citizens who bring about a good and just society. And as all of you, to you, this is not news. I mean, you can see in our society the amount of inequity which is there, the kind of problems which are there. And if it is not the young who are going to address this, who is? So I think all that you are doing in NSS is something that we as an institution are very proud of. And we would really like to imbibe we would like to see that you become change makers, not just in terms of technology, but also in terms of bringing about a new society, a society that you feel is more just and equal. And I think all the steps that you've been doing, whether it is pre-pandemic or during the pandemic, are really useful to society. And I think also it gives us meaning in what we do. So it also builds a lot of skills and abilities in you. So I think this is what NSS is about. And I'm delighted to be here. I'm also happy to see this form, where you're talking of enacting through drama and tamasha, because I think the whole idea is to make to look at a socially important message, but to do it in a way where it still strikes a chord. And what strikes a chord better than Bollywood? So I come from the land of Mumbai, which is Bollywood, but you can see Bollywood becoming socially relevant. And this is something which is the challenge and something which you've taken it up. So I'm delighted to be here, and thank you all for giving me this opportunity. I will watch some of your plays, and so I wish you, I hope that you can take this to greater heights, and wherever you are as an IIT Delhi alumnus, in a corporate job or in whatever you do, you actually bring about the social change that you feel is just and right. Okay, thank you. So I'd just like to take this opportunity to say that two of our projects, which were started in NSS IIT Delhi, one was Blood Connect and one was Indian Road Safety Campaign. So they started from IIT Delhi and they have taken a big shape. So now they have taken up by the ministry and very well appreciated. And sometimes we share the stories from there as well. So we hope to have more such success stories in. Thank you so much for your kind words, Professor Rangan Banerjee. Thank you for taking out time from your busy schedule to join us here. I'm sure your words would have instilled newfound confidence and enthusiasm in our participants as well as the audience. I would now request our Co-General Secretary, Kavya Parname, to honor Professor Banerjee with a bouquet. Also, I would request Professor Mukhopadhyay to present a memento to Professor Banerjee. Now, I'd like to introduce our judges, Ms. Chandana Hiran and Mr. Nikhil Chaudhary. Ms. Chandana Hiran is a regular student like one of us.
became a change maker when she filed a petition against Fair and Lovely's ideology. HUL removed the word fair from its popular skincare brand, Fair and Lovely, as part of a rebranding exercise. This act of bravery is empowering as we watch people from all walks of life come forward and talk about what is wrong with society's treatment towards the idea of beauty. Nikhil Chaudhary is an actor and director with Alchemy Theatre Society. He formerly worked at Ankahi Theatre Society at IIT Delhi, playing, directing, and teaching theatre. Nikhil has 7 years of professional theatre experience as an actor, performer, and director. Throughout his theatre career, both at the academic and professional levels, he has acted and directed over 40 productions. So, after each performance, we will be having polls to give People's Choice Award at the end, in which you will have to fill a form to which passwords will be told from the stage itself. So, beginning the most awaited moment of performances, let's welcome our first performance, which is stage 2. And our first entry of the day is inspired by the film Viva. The social issue highlighted in the film is colorism. It depicts how dark-skinned people are not treated respectfully to fair-skinned ones. Let's play the खूबसूरती क्या है? क्या मैं खूबसूरत हूँ? लोग प्यार लोग से प्यार मुझे से छोटी मुझे बुलाते छोटी हैं। बुलाते हैं। मैं मैं अपने स्कूल या कॉलेज की सबसे सबसे सुंदर लड़की तो कभी नहीं थी, पर मेरे बचपने और बचकानी हरकतों की वजह से मैं सबकी लाडली बन गई थी। पहले मुझे अपने रंग और रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता था, हालांकि माँ को उसकी बहुत फिक्र थी। उन्हें शायद कभी ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उनकी सौतेली बेटी मेरी पूनम जीजी उनकी सगी बेटी से अधिक सुंदर थी। लेकिन बड़े होते होते मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ मेरे माँ के विचार नहीं थे। पूरे समाज को लगता था कि सांवला होना बदसूरती की निशान है। क्या मैं सही में इतनी बुरी लगती हूँ कि लोग मुझे देखना भी नहीं चाहते? लोगों को छोड़ो, मेरे खुद के माता पिता मुझे पसंद नहीं करते। क्या मेरा सांवला होना इतना बड़ा अपराध है कि जब घर में आग पड़ी थी, पिताजी को मुझसे ज़्यादा जीजी का लहंगा बचाना था। सब लोग क्यों मेरी तुलना जीजी से हमेशा करते हैं? नहीं हूँ गोरी तो क्या करूँ? मैंने माँ की हर बात मानी। बचपन से पाउडर लगाया, लेप लगाया, हल्दी का दूध पिया। नहीं बन रही हूँ गोरी तो मेरी क्या गलती? छोटी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि दरवाजा बंद मत रखा करो। सुबह से तैयार क्यों नहीं हुई? आज लेप भी नहीं लगाया। हर वक्त जीजी कह के घूमती फिरती हो। तुम्हें पता है लोगों की नजरों में तुम्हारी जीजी बहुत सुंदर है, और तुम वो तो शादी करके चले जाएगी और तुम क्या करोगी? हाँ, वो उस घर और परिवार को संभालते तुम्हें भूल जाएगी। होश में आओ छोटी। पाउडर ठीक करो। चेहरे पे दाग जैसा लगा है। छोड़ो। इस घर में मुझे ही सब कुछ करना है। चेहरा तो देखो। बोला था बेसन लगाने के लिए। बस माँ बस, बहुत सुन लिया मैंने। आपका ये पाउडर लगाना, लेप लगाना, हल्दी का दूध पी कर तंग आ चुकी हूँ। क्यों कर रहे हो ये सब? ताकि मेरी शादी हो जाए? जो मेरे रंग से नफरत करे, जो मेरी हर बार जीजी से तुलना करे, मैं उससे शादी क्यों करूँगी? माँ, नहीं करनी है मुझे उससे शादी। आपको क्या लगता है शादी करके सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं माँ, नहीं। मुझे पढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है। यहाँ मधुपुर में बैठ के आपकी तरह पाउडर लगाना नहीं चाहती। छोटी, ये सब बेकार की बहस मुझसे मत करो। तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी हरकतों से। जब देखो रेडियो डालकर नाचती रहती हो। घर के काम में मेरी कोई मदद नहीं करती, फिर भी मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ? ये सब ड्रामा बाद में करना। चुपचाप तैयार होके नीचे आ जाओ, घर में मेहमान आए हैं। दिमाग खराब हो गया है लोगों की ताने सुन कर। टांग अड़ाने के अलावा कुछ नहीं आता उन्हें।
दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। ये कपड़े बाहर लेके आओ। पूनम की शादी के बारे में बात करने लगे और क्योंकि वो गोरी है और उसमें कोई कमियां नहीं है तो वो तुम्हारे रंग के वजह से तुम्हारी शादी न होने के बारे में बात करने लगे। इसलिए बोलती हूँ कि पाउडर ठीक से लगाया करो, ऐसे मत घूरो मुझे। और बाहर जाते वक्त अपने दांत मत दिखाना। मैंने वो हल्दी का लेप बनाया है, बाद में लगा लेना। हर रोज लगाओगी तो रंग थोड़ा हल्का हो जाएगा। और थोड़ा काम भी क्या करो। ऐसी दिखोगी और काम भी नहीं करोगी तो कोई लड़का तुम्हें दहेज देने पर भी शादी नहीं करना चाहेगा। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। आपने कभी सोचा है आपकी वजह से एक छोटी सी बच्ची पे क्या गुजरती हो अगर उसकी खुद की माँ उसे बदसूरत बुलाए? अगर हर बार घर में मेहमान आने से पहले उसके चेहरे पे एक टंकी पाउडर लगे ताकि वो गोरी दिखे, क्या वो अपने आप को कभी स्वीकार कर पाएगी? जब वो आईने में अपनी शक्ल को देखे क्या वो कभी खुश हो पाएगी? नहीं माँ, नहीं। आपकी वजह से मैं कभी अपने आप को पसंद नहीं कर पाऊंगी। ये क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल दिया मैंने माँ? आपको कैसे लगेगा अगर नानी आपसे बोले कि आपकी शादी पापा से दहेज देने के कारण हुई हो? इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। पूनम इतनी सुंदर बच्ची है, मुझे लगा कि तुम पीछे छूट जाओगी और लोग तुम्हें भूल जाएंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी बेटा, लेकिन शायद मैं सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी। और बस उतना ही बोलना था आपको? हाँ, अब पापा के आने का समय हो गया है, कम से कम खाना लगाने में मेरी मदद कर दो। छोटी कि नहीं हो रही गोरी तो उसमें उसकी क्या गलती है? आखिर गोरा होना ही क्यों है? A very brilliant effort. But before we move on, I'd like to inform the audience about the voting poll. The voting poll for the entry has been launched and will remain open for a while. The password to which is 4 times 1 1 1 1 1. The audience has 90 seconds to vote, and the online audience will vote through the Zoom, and the forms link will be present in the WhatsApp group. Password is 1111. Hello, sorry about the confusion. All those who joined us online would get a pop-up on their screen and they have to vote using Zoom. And all of those who have joined us offline would have received a Google form link on their WhatsApp group. And you have to enter the password 1111 on that Google form to vote. For the convenience of the offline audience, the link has been put on the group description, so you can access it from there. And it will remain open for another 30 seconds or so for you to cast your vote.
In the meanwhile, we'll move ahead with the second performance. So our next entry revolves around the unheard story of K. Prithika Yashini, the first transgender police of India. And the Icon of Inspiration Award 2019 goes to चलो सुनाती है मैं एक कहानी। कौन है वो, किसकी कहानी, है पुरुष या है जनानी, सुन लो मेरी जुबानी। वैसा है तुझे समाज में किसी जगह नहीं मिलेगी। मर्द के नाम पर धब्बा है तू, प्रदीप बनने चला प्रियंका। वैसी क्या वे चिकने, किधर जा रहा है वे? चलना, जेब खाली करना इधर। क्या पसंद नहीं है तेरे को? मैं भी और हूँ। क्या बोले रे तू? इधर इधर इधर। क्या था मेरा दोष कि वैसी मेरी काया, मैं खुद को ना पहचानूं। रब कैसी तेरी माया, कैसी है ये चुभन, न जाने कैसा दर्द है ये बदनसीबी या कोई अधूरा कर्ज। सभी खुद ही खुशहाल जिंदगी, क्यों दिया मुझे ये दर्द। बनाया फुर्सत से तूने सबको, पर नाम है औरत, नाम है मर्द। क्या कहेगी बहन, ये हमसे तो पा लेते हैं, लेकिन हमारे पीछे धूप पे चले जाते हैं। और तू चिंता ना कर, तू अपनी पहचान खुद लिखेगी। तो आज से एक नए नाम और नए पहचान से जानी जाएगी। तू जानी जाएगी पृथ्वी से। लिखने वाले लिखे नसीबा, दर्द दिशाई नाल मेरा, मेरा रास्ता क्या मेरी मंजिल क्या, मेरा रास्ता क्या मेरी मंजिल क्या। एक बार रबा मैनू दस दे, जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे, जग बेगाना हो या ना पीर पराई समझे। अरे बहन सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर शर्मा जी के यहाँ लड़का हुआ है। हमारी सारी मंडली जा रही थी, तो सोची तुम्हें भी अपने साथ लेते चलो। चलो एकदम रैप चिक बनकर। नहीं बहन, मैं इस सब के लिए नहीं बनी है। मेरी नौकरी लग गई है हॉस्टल के वार्डन की। उधर जाके मैं पुलिस भर्ती की तैयारी भी करेगी। हम सब की पहचान को बहुत आगे लेके जाएगी, मैं नाम रोशन करेगी। मुझे पता था तू ये सब करके अपना जीवन नहीं जिएगी, अपना राह स्वयं बनाएगी। आज मौसम बड़ा, अरे ओ राम सिंह, अरे चाय समोसे ले आ, वो बारिश का मौसम होने लग रहा है। मैं सवेर तक काम पे बैठा हूँ, अरे सेवा ही कर दिया करो थोड़ी। साहब जी, अरे रुको रुको, आराम से बैठ के बात करा आपा, इतनी के काली है। साहब जी वो फॉर्म में कौन है? अरे रुको रुको रुको, वो मेरी चाय तो अब भाई है, मैंने चाय तो पी लेने दो। हाँ जी अब बोलो। साहब जी ये फॉर्म देखो ना, इसमें जेंडर में मेल फीमेल है, लेकिन ट्रांसजेंडर का कॉलम ही नहीं है। अरे तुम तो यही टेंशन ले रखी है, तुम तो दोनों में भर सको, भले लेडीज में भर लो और भले जेंट्स में। देखो मैं फॉर्म ना ट्रांसजेंडर के ऑप्शन से ही भरेगी।
अरे मैडम जी, इतनी चुल्ले ना तो जाके कोर्ट में करा लियो, मरकड़ के लेना आए हो। आ जावे टाइम खराब करता है, क्या उड़ता है। इस फॉर्म में ना कॉलम तो मैं डलवा के रहूंगी, अब उसके लिए चाहे मुझे अदालत का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े। और अपनी कुर्सी पे ना ध्यान से बैठिएगा, कहीं पता चले कल आपको आपकी जगह मैं दिखे। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की पुलिस रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन को तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विसेज बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, वो भी सिर्फ इस आधार पे कि मेरी क्लाइंट एक ट्रांस वुमन है। योर ऑनर, मैं इजाजत चाहूंगी कि मैं इस अदालत में वो फॉर्म पेश करूं जो मेरी क्लाइंट ने फिल किया था, और इस फॉर्म में ट्रांसजेंडर का कॉलम मिसिंग है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135.1, हिजरास यूनक्स can also be treated as third genders for the purpose of protecting their rights which are mentioned under part 3 of the constitution. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ये आदेश दिया था कि वो इन थर्ड जेंडर्स को उनकी लीगल रिकॉग्नाइजेशन दे। श्रीमती महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आज हम इस न्यायालय में क्या कर रहे हैं? मेरी दोस्त यहाँ खड़े होकर फैक्ट सुना रही है या फिर ये इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस चला रही है? ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की मर्यादा को बनाए रखें। योर ऑनर, हमारे इस उच्च न्यायालय ने अपनी गलती को सुधारते हुए ये निर्देश दिया था कि इन सब का एक टेस्ट करवा लिया जाए। माय लॉर्ड, निर्देश अनुसार तमिलनाडु सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जब अभियोगी का टेस्ट लिया तो रिटन टेस्ट में ये सिर्फ कुछ ही अंकों से पास हुई और फिजिकल टेस्ट में ये बुरी तरह फेल हो गई। और अब अगर इन्हें दोबारा मौका दिया जाता है तो ये संविधान के आर्टिकल 14 का वायलेशन कहलाएगा। मेरे क्लाइंट ने हर एक टेस्ट को क्लियर किया है, सिवाय एक से चूक गई, और वो भी सिर्फ 1 सेकंड से, और वो थी 100 मीटर की दौड़। लेकिन इसमें हम सब लोग ये बात भूल गए कि मेरी क्लाइंट ने कितनी मानसिक पीड़ाओं का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंची। और वैसे भी इनकी कम्युनिटी से मेरे क्लाइंट के अलावा और कोई भी इस सब इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए नहीं था। सो योर ऑनर, द ओनली पर्सन हु डिजर्व्स दिस सीट इज माय क्लाइंट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितनी मशक्कत के बाद इनके क्लाइंट को ये मौका मिला, उतनी आसानी से इनके क्लाइंट ने मौका गवा भी दिया। ख्वाब बड़े बड़े पर मेहनत के नाम पर कुछ नहीं, और फिर आ जाते हैं कोर्ट में इस न्यायालय का वक्त जाया करने के लिए, क्योंकि इनके अपने वक्त का तो कोई मोल ही नहीं है। क्या कहे, लगता है भीख मांगने की आदत गई नहीं अब तक इनकी। माय लॉर्ड, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप इस केस को पूरी तरह खारिज कर दीजिए। धन्यवाद। अदालत दोनों पक्ष के तथ्यों को सुन चुकी है। अदालत के फैसले से पहले अभियोगी को अपनी दलील पेश करने का मौका दिया जाता है। योर ऑनर, मैं भी एक आम इंसान है जिसका जन्म ऐसे ही हुआ जैसे एक आम इंसान का होता है। मैं भी ख्वाब देखी, उसे पूरा करने की कोशिश करी, पर शायद ये समाज मुझे ना नजरों से देखता ही नहीं है। मेरे ख्वाबों को अपने पैर की धूल तक नहीं समझता है। मैं पूरी जिंदगी ये सोच में बिता दी कि काश मुझे मेरे अस्तित्व के लिए जिल्लत नहीं, सम्मान मिलेगा। इसी सम्मान के लिए, अस्तित्व के लिए, ख्वाबों के लिए मैं आज यहाँ खड़ी है, और यह बदलाव सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए चाहती है। ये न्यायालय है ना, न्याय दिलाता है ना, तो मुझे भी न्याय दिलाएगा, मेरे समाज को भी सम्मान की एक नई किरण दिखाएगा, और वही फैसला लेगा जो सबके हक में होगा। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगली भर्ती शुरू होने से पहले ट्रांसजेंडर यानी तीसरे लिंग को इस फॉर्म में शामिल कर दिया जाए। इसके साथ ही ये घोषणा करना चाहती है कि याचिकाकर्ता को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाए और उन्हें उनका नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। अदालत उनके साहस और कठिन परिश्रम की सराहना करती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। एंड द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो ये थी मेरी जुबानी, मेरे संघर्ष की कहानी। किया जो दिल ने कहा, दुनिया की बात ना मानी। पहचान होती है कर्म से, ना लिंग से जाननी जाती। पता नहीं काय को थी मैं अब तक खुद से ही अनजानी। वो कहते हैं ना, जिंदगी में बहुत पड़ाव आते हैं, लेकिन उसका रास्ता हम खुद ही बनाते हैं। जैसे मैं खड़ी आज आप लोगों के सामने इस पुलिस की वर्दी में,
लेकिन मेरा सफर इधर ही खत्म नहीं होता है। इसके आगे का लक्ष्य आईपीएस ऑफिसर बनना, जिसका रास्ता भी मेरा ही इंतजार कर रहा है। इस बार भी बहुत रुकावट आएगी, बहुत संघर्ष होगा, लेकिन मैं रुकेगी नहीं। अपनी मेहनत से अपना लक्ष्य पाएगी और अपना अस्तित्व को पहचान दिलाएगी। और एक बात याद रखना, जिंदगी में जितनी भी रुकावटें आए ना, हिम्मत से लिया एक कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। Now, our next entry of the day is inspired by the movie Udan. It depicts the impact of masculine toxicity. The entry involves a conversation between two brothers where the younger brother tries to persuade the older one that his approach to his connection with his two sons is flawed and he needs to reconsider. Now let's have a look at this entry. Hello. Thank you. Hello. Hello. Hello, 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 hello. बढ़िया फुल है Can we start?
भैया आप शादी शादी कर रहे हो भैया? आप किससे? है कोई? और भैया रोहन और अर्जुन का क्या? दोनों है ही नालायक, हमें हमेशा अपना दुश्मन ही समझो। लेकिन भैया वो दोनों है तो आपके बच्चे ही, और आप अर्जुन को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हो, वो बस अभी 6 साल का है। बाबूजी ने जब हमें बोर्डिंग स्कूल भेजा था हम भी सिर्फ 6 साल के। भैया अर्जुन आपके जैसा नहीं है। नहीं है तो बन जाएगा। आप एक बार सोच तो लीजिए आप क्या कर रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है। तुम हमें मत बताओ कि क्या सोच रहे हो। ये सब छोड़ो। ड्रिंक पिएगा? नहीं भैया, अगर आपको भारी पड़ रहा है तो अर्जुन को हम रख लेते हैं। भारी पड़ रहा है नहीं, मेरा मतलब अगर आपसे नहीं भारी पड़ रहा है मतलब क्या? भैया मैं बस ये कह रहा हूँ, अगर आपको मुश्किल है तो अर्जुन को हम पाल सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। हम यहाँ बच्चा बेचने का दुकान नहीं खोले। भैया आप गलत क्यों ले रहे हैं? अगर अर्जुन को तुम गोद ले लोगे तो उससे तुम्हारी मर्दानगी नहीं चली जाएगी। तुम्हें बच्चा नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे बच्चे गोद लोगे, समझे? That's not fair भैया। Not fair? तुम हमको बताओगे what's not fair? जाओ यार। आपने उसको एक मौका दिया, आपने एक मौका दिया, मौका दिया, अपनी पूरी कमाई लगा दी उसके ऊपर, फेल होकर वापस आया, मैंने उसका हाथ जोड़कर एडमिशन कराया, लात लात खाकर वापस आया, मौका दिया। भैया उसने काम किया है, उसने लिखा है, कचरा लिखा है, और तुम उसको बढ़ावा देना बंद करो। जो सपने तुम खुद नहीं जी पाए उस पर थोपना बंद करो। मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारे सपने। मेरे जैसा? मेरे जैसा मतलब? देखो अपने आप को। ब्लडी लूजर भैया, ब्लडी लूजर हूं ना मैं। लेकिन एक बात याद रखना भैया, भाभी का घर छोड़ के जाना मेक्स यू अ ब्लडी लूजर। बाबूजी से अपने ड्रीम्स के लिए ना लड़ पाना मेक्स यू अ ब्लडी लूजर। आपके खुद के बेटे का अपने पिता से डरना मेक्स यू अ ब्लडी लूजर। आपको अपनी ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये मर्दानगी, इस पर्सनैलिटी में बहुत आपको वो है ना गर्व। बट लेट मी टेल यू भैया कि आपका ये बिजनेस एम्पायर और ये सारी मर्दानगी, ऑल दिस नॉनसेंस डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ ब्लडी लूजर। अपनी ये मर्दानगी टीवी के सामने जाकर दिखाना। मार लो भैया, क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा। और वैसे भी आपका बिजनेस एम्पायर जो फ्लॉप हो चुका है आपके रिलेशनशिप्स की तरह, और मैं ब्लडी लूजर। वाह भैया, आपने कभी देखा है खुद को कि आप कैसे हो? अपने बेटे से पूछा, अपनी बीवी से पूछा, अपने भाई से पूछा आपने कभी? आप बदल गए भैया। ये मर्दानगी मर्दानी करते करते आप भूल गए कि असली मर्द क्या होता है, कि मर्द को भी दर्द होता है। वो मैं ऐसा बनाया मुझे मेरे बाप ने। ये मर्दानगी मुझे मेरे बाबूजी से मुझे मिली है, और उनको उनके बाबूजी से मिली थी। ये वो मर्दानगी है जो दुनिया का हर बाप अपने बेटे को सिखाता है। मैंने भी बस उतना ही करने की कोशिश की है, बस उतना ही जो दुनिया का हर बाप करता है, जो दुनिया का हर बाप करता है।
आपकी इस मर्दानगी की वजह से उन बच्चों पे क्या बीती आपको पता है? आपने अर्जुन को मारा, वो हॉस्पिटल में है भैया। भाभी घर छोड़ के चली गई। आपने कभी खुद को देखा है? एक बार शीशे में खुद को देखा आपने कभी कि आप कैसे हो? खुद को बदलो भैया। अगर यही चलता रहा ना तो एक दिन सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, मैं भी। भैया आखिर कब तक ये बर्दाश्त की विरासत चलेगी? Eye opener indeed. But before moving on, I'd like to inform you the password of the Google form for this time. It is 2221 and the form will remain open for 90 seconds. So please cast your votes. Moving on, the following entry highlights several social aspects like gender norms and body shaming. This entry is inspired by an American sitcom named Friends. Friends तो आप सबने देखा ही होगा, like most of us, right? So let's move on. I was a little bigger then. I thought that was something they used to cover Connecticut when it rains. Hey, what's on this videotape? Okay. I see Rachel's coming up in path. Oh, doesn't she look pretty, Jack? Get this. What's on her nose? We had to reduce it because of my deviated septum. Okay, I was wrong. That's what they used to cover Connecticut. Well, it was definitely not your sensitivity that they used to cover Connecticut. You know guys what this is? This is us getting ready for the prom. Guys. I think you don't have to watch this. Yes, you want to do it? You got a shot of Monica. Where's Monica? Over here, Dad. Wait, how do you zoom out? There she is. Hey! Somebody, Monica! What do you think makes a person fat, Joey? Eating away your loneliness? And why do you think every fat person is lonely? She had more friends than you did. And how would you like it if I talk about your insecurities? I'm sure you won't want me to pull out your high school face. And look at her, so beautiful. Me looking fat does not make me ugly, but you talking like that makes you ugly. We all have changed so much.
Mom looks so adorable. Yeah. You all look so good here. I wish I was there. Ben, give Daddy the Barbie. Give Daddy the Barbie. Don't you want to play with this monster truck? No, no, Dad. I want to play with this Barbie. What about this super soldier? Ross, you're so pathetic. Why don't your son just play with the doll? I don't understand. He's playing only with the doll. So what? Get him one. He seems to like them. He's a boy. What about this G.I. Joe? The American toy. Do you want to play with this? Please drop the Barbie. Drop the Barbie. Why don't you listen to me? Bang. Oh, for the love of God, Ross, just leave the child alone. Stop limiting him with your stupid stereotypes. He's a boy and he's playing with only dolls. Okay, all right. I am weak, I drink tea. Won't you dance around with me? Hi, Mom. Hello. Thanks for coming. You look beautiful. This is so exciting. I never thought this day would come. Hi, Mrs. Hanks. Hello. Are you his mom or his dad? Well, hello everybody. How is everyone? Hi, hello. Nora. Charles. How you been? I've been good. How have you been? Good, pretty good. Aren't you a little too old to wear this dress? And don't you have too much penis to wear a dress like that? Whoa. Excuse me? Guys! What's the problem with dresses? Why do women wear whatever they want and we can't wear anything? It's so bad. Oh my God. Oh no. A real man never wears a dress, Joey. You know what? Joey is right. Do you think it's demeaning for a man to act like a girl? Why are you guys always ashamed to act like a girl? Hi. Oh, hi. Hello. Come here. Hi. Charles, would you mind sitting? Oh, I'd love to. Thank you. Okay, very few of them. So yeah, definitely we can say that your gender cannot define your choices and your actions. And we didn't know that such references could exist everywhere. Like friends mein ye sab hoga, I never expected. So yeah, let's move ahead to the poll. The poll will remain open for 90 seconds. And the password is 1234.
Moving forward, the next entry is about domestic violence. It is an enactment of the original piece from the movie Secret Superstar. What if the Najma Ali and her daughter Insia Malik stood up against the male chauvinist father much earlier when he punished them for buying small material things for their pleasure? Now let's have a look at it. तूने मुझसे झूठ कैसे बोला? हाँ, इतना कीमती हार बेचने की सोच भी कैसे ली? वो भी किसके लिए? तुम्हारी नालायक बेटी के लिए? अपने आका की इज्जत करना भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। कुछ पूछ रहा है मेरा बेटा? ये सिखाया है तुझे तेरे घर वालों ने? पति से झूठ बोलना, अपनी मनमानी करना, अपनी ही चीजों को उसके बिना इजाजत के बेच आना। अरे ये तो मेरे बेटे का बड़प्पन है जो उसने अभी तक तुझे जान से नहीं मार दिया, वरना तेरी औकात ही क्या है? तू औरत है, तुझे कोई हक नहीं बनता अपने बारे में सोचने का, इस आदमी की बेटी के बारे में सोचने का। निकाह वाले दिन मैंने तुझे क्या सिखाया था? मर्द कुछ भी करे, तुझे चुप रहना है, तुझे कुछ नहीं बोलना क्योंकि तू एक औरत है। इसके अब्बा जान ने भी मुझे मारा था, कुछ कहा मैंने? कुछ नहीं कहा, इसलिए तो आज आपका बेटा ऐसा बदतमीज और गिरा हुआ इंसान निकला है। क्या बोली तू? ऐसे बात करेगी? यह सिखाया तेरी अम्मी ने? ओ नजमा मोहतरमा, इसको तो तभी मार देना चाहिए था जब बेटा हुआ था। एक तो वैसे ही पैसे की बर्बादी है, ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखाती है। देख नजमा देख, कैसे तेरी बेटी जिसके लिए तू सबसे लड़ी, परिवार से अलग हो गई लेकिन जिसे तूने मरने नहीं दिया, आज कैसे तेरी गलतियों की सजा भुगत रही है। नहीं रे, तुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर आज ये इंसू को जान से भी मार दे? तुझे तो मुंह में दही जमा के रखनी है, फिर चाहे ये आदमी अपनी बेटी की इज्जत को ही क्यों ना बर्बाद कर दे। अम्मा, मैं ठीक तो कह रही हूं ना बेटा? ये तो अम्मी के लाने के लायक ही नहीं है। अरे तू रुक क्यों गया? मारता रहे, चल बेटा मार उसे। मैं तो कहती हूँ अपनी बीवी को भी 2-3 और लगा दे, और गुड्डू को भी बुला ले, मेरा पोता भी तो सीखे कि कैसे अपने घर की औरतों को दबा के रखना चाहिए। आप क्या बोल रही हो बड़ी अम्मी? इस समय अम्मी को आपकी जरूरत है और उनकी ढाल बनने की जगह, अब्बा को कुछ बोलने की जगह आप अम्मी को ही कोस रही हो। हाँ, मैं तेरी अम्मी को ही गुनहगार मानूंगी, और क्यों ना मानूं? इतने साल जो सर झुका के गालियां, जूते, चप्पल इसने चुपचाप खाई है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ ये है। मुझे तुझसे उम्मीद थी कि अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों के लिए तू लड़ेगी, पर नहीं। आपको भी लगता है कि गलती मेरी है आपा, आपके बेटे की नहीं? आपको सच में ऐसा लगता है कि भूल थप्पड़ खाने वाले की होती है, थप्पड़ मारने वाले की नहीं? जो इतने जुल्म इन्होंने मुझ पे किए हैं उसके लिए आप सिर्फ मुझे दोषी कैसे ठहरा सकती है? आपका बेटा दूध का धुला नहीं है आपा। ओए, कर दी बकवास शुरू फिर से। तू चल मेरे साथ, तुझे अभी दिखाता हूँ जबान चलाने का बड़ा शौक है ना तुझ माँ बेटी को। उठा डंडा और मार इन दोनों को, आजकल ज्यादा ही पकने लगी है। तू उठा और मार, तुझे तो भैंस की सींग की तरह मारने के अलावा आता ही क्या है? अपने अब्बू पे गया है, अकल ढीले भर की नहीं है उस खोपड़ी में, बातों से काम करना आता नहीं है, और आएगा भी क्यों? तू तो मर्द है, तुझे तो हक है जाहिलों जैसे बर्ताव करने का। अम्मी, आप इन बातों से दूर रहो तो अच्छा है। अब्बा यहाँ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके जब में जो आएगा वो कहोगी। इस घर का स्वामी मैं हूँ, पैसे मैं लाता हूँ। तुम सब जो खा रहे हो वो मैंने कमाया है, तो मेरे से तमीज से बात करना। तो अम्मा चुप हो जाइए, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ इसलिए चुप हूँ। मुझे मजबूर मत करिए गलत कदम उठाने के लिए। उठाइए गलत कदम आप क्यों रुके हैं अब्बा? बड़ी अम्मी ने आपके खिलाफ 2 लफ्ज बोले हैं, चलिए उनका भी वही हाल कीजिए जो आपने अम्मी का किया है। अम्मी, आप ठीक तो है ना? अब्बा ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? अम्मी, आप तो बस इंसू को खुश देखना चाहती थी ना, क्या अम्मी ने कुछ गलत किया? नहीं गुड्डू बेटा, आप अंदर जाओ। आपकी अम्मी ने बस थोड़ी सी शरारत करी है, पर शरारत तो मैं भी करता हूँ, आप मुझे तो नहीं मारते। तुझे नहीं पता,
तेरी अम्मी ने अपने हक के लिए लड़ा। ये गुनाह है गुड्डू बेटा, गुनाह। तेरी अम्मी तो क्या, किसी भी औरत को अपने हक के लिए लड़ना मना है। अम्मी बस कीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को, आप अंदर जाइए। बोलने से कतराते हैं पर करने से नहीं घबराते। बस बहुत बोल चुके, अब आप भी चुप रहेंगे, इंसू भी और आपा भी। सही कहा आपने आपा, गलती मेरी ही है जो अपने अब्बा की बात सुनकर एक ऐसे मर्द से शादी कर ली जिसे सही या गलत, इज्जत या अपमान, बड़े छोटे किसी का लिहाज नहीं है। मैंने किया है जो इनके हर एक ताने को सुनकर चुप बैठी रही इतने सालों तक। गलती मेरी ही है जो एक ऐसे घर में टिकी हुई हूँ जहाँ गली के कुत्ते से भी कम इज्जत है मेरी। इसकी सजा मेरे बच्चे नहीं भुगतेंगे। एक बेटी के जन्म लेने से पहले ही समाज से उसकी हर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक औरत को अपनी हर एक सांस के लिए, अपनी जिंदा रहने के लिए तक एक समाज से लड़ना पड़ता है। मैंने इंसू की जिंदा रहने की लड़ाई उसके पैदा होने से पहले लड़नी शुरू करी थी और आज तक हर एक पल मैं उसके जिंदा रहने की, खुश रहने की लड़ाई लड़ती रही हूँ। और उसके चरित्रहीन बाप की वजह से मैं ये लड़ाई नहीं हार सकती। मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। नजमा, ये हुई ना बात, इसे कहते अपनी हक की लड़ाई। चल तूने कदम तो उठाया, मैं तो पूरी जिंदगी तरसते हुए काट गई कि काश मैंने अपनी औलाद को अपनी इज्जत करना सिखाया होता, तो आज उसके ऐसे रंग रूप ना देखने पड़ते। तुझे पता है फारूक, तेरे नाम का क्या मतलब है? फारूक यानी वो जिसे सही और गलत में फर्क समझ में आए, लेकिन तूने उस नाम को मिट्टी में मिला दिया। तू बता, मर्द और औरत में फर्क करना तो सीख गया, फिर सही गलत में क्यों ना कर पाया? इतना निकम्मा बेटा पाला है, ये बात सोच कर ही अपने खून पे लानत आती है। आपकी अम्मी आज भी अपने आप को दोषी देती है। पता है क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग जो अपने आप को मर्द कहते हैं, उन्हें लगता है वो जो करते हैं वो सब ठीक है। गलतियां तो सिर्फ औरतों की होती है क्योंकि यही तो आप लोगों की पिछड़ी हुई सोच है। अच्छा ये बता, तुझे बड़ा घमंड है ना अपने मर्द होने का? चल गारंटी फॉर्म साइन कर कि तेरे इस महान काम के लिए तू अपने अगले जन्म में बंदर, बिल्ली, चूहा, घोड़ा पैदा नहीं होगा। और अगर हो गया बेटे, तो माँ कसम जहन्नम से उठा कर लाओगी। जाने दीजिए बड़ी अम्मी, ये तो किसी के पैर की जूती बनने के भी लायक नहीं। गधा घोड़ा तो बहुत दूर की बात है। घूर क्या रहे हैं आप अब्बा? सही तो कहा मैंने, अम्मी ने आपसे शादी कर कर आपके ऊपर एहसान किया है। चुप, एकदम चुप। यहाँ सबकी जबान कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है। दो पढ़ेंगे तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सबके पर निकल आए हैं, अकल ठिकाने आई। तुम औरतों की कोई हैसियत नहीं है, चपड़ चपड़ करते रहते हो। यहाँ पे मारकर दफना दूंगा, मौत के बाद अपना मोर्चा खोल लेना, समझ गए? बस अब हम चुप नहीं बैठेंगे और चुपचाप आपकी दादागिरी नहीं सहेंगे। देखा गुड्डू ने भी है, देखा आपा ने भी है कि क्या हुआ है यहाँ पर। अरे आप जैसे घटिया गवार आदमी को जेल में होना चाहिए और वही मैं आपको आज पहुंचाऊंगी, नहीं तो मेरा नाम भी नजमा अली नहीं। नजमा, कलेश मत करो। पुलिस और बाहर वालों को घर के मामलों में मत ढकेलो। बात कर लेते हैं, ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। बेवजह ओवर रिएक्ट मत करो। वजह आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। मैं मानती हूँ आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, पर उससे पहले मैं एक औरत भी हूँ। और अगर आज मैंने अपने हक के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी तो गुड्डू का तो पता नहीं, पर अपनी बेटी को मैं अपना मुंह उठा के नहीं दिखा पाऊंगी। ऑफिसर, मैं इन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना चाहती हूँ। ये मुझ पर और मेरी बेटी पर हाथ उठा चुके हैं। आप चाहे तो वहाँ देख लें। मेरा बेटा और मेरी अम्मी गवाह बनने के लिए तैयार है। इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, आप इनकी बात मत सुनिए। देखिए, चाय पे बैठकर बात करते हैं, मामूली सी बात है। पर अब्बा, जब भी अम्मी या इंसु अपनी मन की करना चाहते हैं तो आप उन पर हाथ उठाते हैं। मुझे याद आ रहा है, जब इंसु स्कूल ट्रिप पर गई थी तो आपने अम्मी की आंख फोड़ दी थी क्योंकि खाने के साथ अचार नहीं था। गुड्डू, आप इसकी बात ना माने, बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। बहुत गर्व था ना आपको एक बेटे का बाप कहलाने पे। आज उसी बेटे ने दुनिया के सामने आपका पर्दाफाश किया है। अब तो शर्म कर लो अब्बू, थोड़ा सा रहम करो।
पाप किया है तो उसे स्वीकार कर लो। गिरने की भी कोई सीमा होती है या आप पाताल लोक जाकर ही मानेंगे? लानत आती है मुझे अपने ऊपर कि तू मुझे अपनी अम्मी कहलाता है। तुम जैसी औलादे जिनमें इतनी नफरत, इतना गुस्सा और इतना बेवजह का गुरूर है, उससे तो बेहतर है एक माँ पूरी जिंदगी में संतान रहे। आज ये सीख लीजिए कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम किसी के भी दबाव में आकर चुप नहीं बैठेंगे। हम खुले पंछी की तरह आसमान में उड़ने के लायक हैं और वो हम साबित करके ही रहेंगे। जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? ₹50 काट ओवर एक्टिंग का। बोलने तो यार तकलीफ हुई है बेचारे को। बट यार जैसा भी था, थोड़ी ओवर एक्टिंग तो थी, बट द मैसेज गिवन वाज रियली नाइस एंड आई रियली लव्ड हाउ हिज मॉम वाज बीइंग sarcastic बीच बीच में कि मार उसको, मार, जितना चाहे मार, मर्द है ना तो फाइनली। Keeping the jokes aside, how pitiful the line is, तू औरत है, तुझे कोई फर्क नहीं, तुझे कोई हक नहीं बनता अपने बारे में सोचने का। Amazing, very well executed. But before coming on to the next entry, voting poll is again open and the password is 4 times 7, 7777. We again have 90 seconds, so please cast your votes. Moving ahead, we have a script which includes a monologue, which is a conversation about Sona's motherhood. One. Sujoy, economy appointment चाहिए with Dr. Avni. Will you please appoint something? थोड़ा सा fix कर दो. ना ना, nothing serious. कुछ भी serious issue नहीं है. बुखार जुकाम भी नहीं है. क्या घबरा जाते हो छोटी छोटी बातों में? Actually, मुझे डॉक्टर अवनी से अपने पीरियड मिसिंग एंड ऑल इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था. हाँ, मतलब मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक इंडिपेंडेंट वुमेन, मतलब समझ जाओ, होना चाहिए यार, होना चाहिए. सुजॉय, actually it's been 2 weeks since I wanted to tell you, but कभी कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया उतना अच्छा. Actually, I'm missing my period since 2 weeks now, and recently I got my pregnancy test, and it is positive. Is it positive? It is positive. No, 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 please, please. Suja, do not get excited. Please, don't get excited. I'm not going to keep this child. No. Sujoy, I'm not a selfish woman. I'm not a cruel woman at all. कैसी बात करते हो? This uterus belongs to me. This body belongs to me. Then why don't these decisions
Seriously? Just because I'm a woman, I should get pregnant and become mother? Motherhood कैसे? मुझसे नहीं हो पाएगा. कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? Don't say this. I've seen Amma quitting her job. I've seen Baba shouting out at her. Why? क्योंकि वो एक अच्छी मम्मा नहीं थे. I don't want to be like her. अपना करियर गवाऊं, अपना जॉब, रेपुटेशन, सेल्फ स्टीम नहीं. I just want to work on my career and betterment of our relationship. That's it. बातों को समझने की कोशिश तो करो. This is not a big issue. At least लीगल है. मैं अपने कंसेंट से कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ. हमारा कंसेंट होना चाहिए. That is important, right? सी सोचो है बहुत इजी होता है. नहीं, इजी नहीं. बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं. दिन भर एक जगह बैठो, चाय, कॉफ़ी, पानी, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स, एक्स्ट्रा कॉफ़ीज़, ये सब डिमांड करने में इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट? जो तुम करते हो. मेरा क्या, मेरी लाइफ तो बहुत इजी है. लाइक सुबह 4 बजे उठो, नहाओ धो, घर की साफ सफाई, फिर कपड़े, फिर ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस, फिर हस्बैंड, फिर फैमिली, फिर लंच, फिर डिनर. लूप में फंस कर रह जाती हूँ. यही तो चलता रहता है. सोचने की कोशिश की है कि एक नए सदस्य की मुझ पर क्या जिम्मेदारियां होंगी. लोग तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि तुम बाप हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ये करो, तुम वो करो. এখন इजी एमो ना. समझने की कोशिश करो, तब समझोगे. एक क्वेश्चन है मेरा तुम्हारे लिए. What is so great about being a mother? सुन मेरी बात. इट्स हर चॉइस. लाइक उसकी मर्जी है ना, उसको माँ बनना है या नहीं. यू कैन जस्ट फोर्स हर टू बी अ मदर, क्योंकि द स्ट्रगल्स, द ऑल दोज थिंग्स दैट गोज बिहाइंड बीइंग अ मदर, वो आप जबरदस्ती से किसी पे ऐसे थोप नहीं सकते. Okay. The poll will be open for 90 seconds and the password is 5555. Moving on, the final entry of the event describes the situation of transgenders in society. This enactment is based on a scene from the movie Super Deluxe, which shows how a family would react to a person who realizes that he's not the gender he was perceived to be by the society at a very later stage of his life. So let's watch the video. लेकिन चलते वहाँ पे दिख रहा है. आंटी 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 रुको. आंटी आंटी ये फूल ले लो हमसे. बस 50 रुपए के. बहुत सुंदर फूल है आंटी.
नहीं बेटा, अरे मुझे मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। नहीं बेटा, बेटा बात मानो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। कल से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज ले लो आंटी। इन बच्चों को खाने की ज़रूरत है और मुझको पैसों की। अगर मैं खाने के बहाने इनको... अच्छा बेटा, तुम्हें भूख लगी है? हाँ आंटी। मेरा घर पास में ही है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। आ जाओ, आ जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। मैं आदित्य, टीम अब्बा नहीं मानिए की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ आपको एक अनोखी कहानी की ओर। हमारी टीम ने फिल्म सुपर डीलक्स को रिक्रिएट किया है। इस कहानी में एक पिता, एक पति और एक बेटा अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। वह मुंबई जैसे महानगर में जाकर पहचानता है कि उसकी जीवन की असली वजह क्या है। लेकिन वो कहता है ना कि आप घर से बाहर कहीं भी चले जाइए, एक टाइम बाद आपको उसकी याद आती ही है। हमारे किरदार के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। 7 साल बाद उसको अपने बेटे से मिलने की बहुत उत्सुकता होती है, तो वह अपने घर वालों को यह सूचना पहुंचाता है कि वह घर आ रहा है। ये सूचना जानते ही उसके घर वाले और पड़ोस के सभी लोग उसके स्वागत की तैयारियां करने लग जाते हैं। परंतु ये समाज किसी को वैसे नहीं स्वीकारता जैसा कि वो है। वह अक्सर उसमें खामियां निकालता है। हमारा किरदार भी मुंबई से कुछ यूँ बदल कर आया है कि उसकी पहचान उसके लिए एक अभिशाप बन गई है। तो आइए देखते हैं आज जीत किसकी होती है, उस समाज की जो आज भी अपनी रूढ़िवादी सोच पर चला आ रहा है, या फिर उस व्यक्ति की जिसने अपना जीवन अपने ढंग से जीना निश्चय किया है। बेटा। हाँ मम्मी। आज हमारे पापा आ रहे हैं। क्या? सच्ची? हाँ सच में। क्या मेरे पापा मुझसे मिलने आएंगे? हाँ सच में पापा मिलने आज। पापा मेरे लिए क्या लेके आएंगे? पापा ना तुम्हारे लिए ना खूब सारी मिठाइयाँ ला रहे हैं, खिलौने ला रहे हैं। वालों को यह सूचना पहुंचाता है कि वह घर आ रहा है। ये सूचना जानते ही उसके घर वाले और पड़ोस के सभी लोग उसके स्वागत की तैयारियां करने लग जाते हैं। परंतु ये समाज किसी जो आज भी अपनी रूढ़िवादी सोच पर चला आ रहा है, या फिर उस व्यक्ति की जिसने अपना जीवन अपने ढंग से जीना निश्चय किया है। बेटा। हाँ मम्मी। आज हमारे पापा आ रहे हैं। क्या? सच्ची? हाँ सच में। क्या मेरे पापा मुझसे मिलने आएंगे? हाँ सच में पापा मिलने आ रहे हैं आज। पापा मेरे लिए क्या लेके आएंगे? पापा ना तुम्हारे लिए ना खूब सारी मिठाइयाँ ला रहे हैं, खिलौने ला रहे हैं। अब तुम उनके साथ खूब मजे करना, खूब मस्ती करना, ठीक है? छी छी छी, ये क्या बन के आ गया है? आंटी से ज्यादा चूड़ियां तो इसने पहन रखी हैं। मुझे तो दया इनके परिवार पे आ रहे हैं। पूरा नाम खराब कर दिया। ज्योति की तो सोच, 7 साल बाद पति में ना वो भी ऐसे। अरे राम, समाज ही खराब है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा चलो ना, चलो ना। अब आपको मेरी याद नहीं आई, अब चलो ना घर। चलो चलो चलो। पापा पापा पापा, ये देखो मैंने ना एक दिन मेडल जीता था। आपको पता है सबके सब तालियां बजा रहे थे, मम्मी भी थी वहां पे। मुझे बहुत मजा आया था। आप क्यों नहीं आए? हाँ अब आओगे अगली बार? पता नहीं कौन बेवकूफी आया है।
दफा हो जा मेरे घर से। किसको पता कहीं मुंबई से ऐसे लौट कर आएगा, पर है तो मेरा बच्चा ही। बेटा ये क्या हो गया तुझे? तू ऐसा कैसे हो गया? किसके बहकावे में आ गया? चल मैं तुझे पंडित जी के पास ले चलती हूँ, तुझे मिनटों में ठीक कर देंगे। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल सही हूँ। पंडित जी की कोई जरूरत नहीं है। चल बेटा चल। नहीं। ज्योति, मेरी बात तो सुनो। चल निकली, बाकी क्या नहीं है? पापा, पापा, आप रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ। अब अच्छा, तो पापा सुनो, मुझे ना आप कल स्कूल चलोगे ना मेरे साथ? आपको पता है वहाँ पे ना मुझे सबके सब टेस्ट ट्यूब बेबी बुलाते हैं। मुझे उन्हें बताना है कि मैं टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं हूँ। हाँ चलेंगे, जरूर चलेंगे बेटा, जरूर चलेंगे। चलो चलो। पापा पापा, आप कहाँ पर थे? आप क्या कर रहे थे? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, पर मैं काम में इतनी बिजी थी ना कि तुमसे मिलने का टाइम नहीं मिल पाता था। पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। चलो चलो। साहब पैसा देना रे साहब। हाँ देना रे पैसा। ये क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ आगे। अरे ऐसा मत करना साहब, कैसा आगे बढ़ आगे आगे। देना कैसा आप दे भाई। अरे जाके के टाइम आगे बढ़ आगे। भाई साहब पैसा देना। जाएगा नहीं तू ऐसे? साहब दे पैसा देना साहब। सुनता नहीं है। आगे बढ़। चल चल तेरे भी बच्चों को चल चल चल। पापा पापा, आप मुंबई में क्या करते थे? वही में हाँ बेटे, आप क्या करते थे मुंबई में? मुंबई में मैं तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चों की मदद करती थी बस। कहाँ जा रही है? मेरा बच्चा है, इसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। हाँ अंकल, ये मेरे पापा हैं, ये मुझे स्कूल छोड़ने आए हैं। अरे बेटा, ये तेरे पापा कैसे हो सकते हैं? अरे सच्ची में मेरे पापा हैं। बेटा, अगर मैंने इनको अंदर जाने दिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर तू चाहता है कि इन्हें अंदर जाने दिया जाए तो जाकर रिटर्न में लिखवा कर ला। अच्छा पापा, आप ना 1 मिनट रुको बस। मेरे को वैसे भी आपको सिर्फ अपने दोस्तों से मिलाना था, मैं अभी 1 मिनट में आया। हाँ। इसको हटाओ यहाँ से। बच्चों पे कितना गलत असर पड़ेगा इसका। क्या कर रही है यहाँ? अरे ये जा ही नहीं रहा है यहाँ से। ये अपने आप को एक बच्चे का बाप बता रहा है। क्यों माहौल खराब कर रही है? जाती क्यों नहीं यहाँ से? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? क्या माहौल खराब कर रही हूँ मैं? और क्या गुनाह किया है मैंने? अरे आओ, ये तेरे पापा है? हाँ। ये तेरे पापा है? अरे आप ना होते तो हम यहाँ ना होते आज। क्या तू पैसों के लिए इतना गिर गया है कि इन बच्चों को किडनैप करेगा? अरे बेच दे इनको। तुझे पता है ना तेरे खाने के कितने लाले पड़े हुए हैं, तेरे पास पैसों की कितनी कमी है। इन बच्चों का क्या है? इन्हें तो वापस फुटपाथ पे भीख ही मांगनी है। ये बदमाश इनके हाथ पैर काट देंगे, भीख मंगवाएंगे इनसे। मत बेच इनको, ये भी तो तेरे बच्चे की तरह हैं। तेरे पापा कितने ग्रेट है, हीरो है हीरो। हम तुझे ऐसे ही चिढ़ाते थे। आप इतना अच्छा काम करते हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे पापा सबसे बेस्ट है। किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा? सीधे के पैसे तेरा बाप देगा। इसका
तेरे आने से हमें कितना झेलना पड़ रहा है, तुझे पता है? वो पड़ोस वाले हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे थे, तुझे पता है क्या खिचड़ी पका रहे हमारे बारे में? अरे बहू के लिए तो सोच लिया होता। लोग तो उसके चरित्र का भी सवाल उठा रहे हैं। ये जो हमारा बच्चा है, इसके बारे में भी लोग बातें बना रहे हैं। अगर इसके भविष्य का अगर इसको कुछ हुआ तो इसके भविष्य की बर्बादी का कारण भी तुम होगे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण मेरे बच्चे को झेलना पड़े, और अगर ऐसा है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन आप लोग इस घर से बाहर निकालिए। देखिए बाहर दुनिया अब सफेद और काली नहीं रही है, सतरंगी बन चुकी है। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और आप भी इस गंदी सोच को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू जैसा भी है हमारा अपना है। तू इस समाज को तेरे जैसे लोगों की जरूरत है ताकि गंदी सोच को निकाल सके अपने दिमाग से। जिन किन्नरों ने दबाव में आके अपने अस्तित्व को भूल गए हैं, उनके लिए तुझ जैसे लोगों की जरूरत है। तो उनके लिए मिसाल बन, उनकी सहायता कर और आगे आ, और इस रूढ़िवादी मानसिकता को बदल कर तू अपनी अलग पहचान बना। हम सब तेरे साथ हैं। ना मुझे किसी ने समझा, ना मुझे किसी ने जाना, क्या बीती है मेरे दिल पर, ये सिर्फ मैंने ही जाना। क्यों ये पहचान मेरी यूं दुश्मन बन गई, ऐ खुदा तू ही बता, क्या है गलती मेरी। इतना आसान नहीं होता यूं डर डर की ठोकरें खाना। काश ये आवाम मुझे कुछ तो है समझ पाती, ना है ये कोई कमजोरी में हूँ मैं ऐसा बना। क्या है मेरी खता, क्या ना इतना भी हक जीवन जीवन मेरा, ना मैं कोई पापी हूँ यूं ना बांधो मुझे, ये बंधन है घुटन मेरे लिए। जीना चाहता हूँ आजाद पंछी की तरह, मुझे उड़ना है उड़ने दो हवाओं की तरह। मैं चाहा ये कि समझे ये दुनिया मुझे, हूँ मैं भी एक इंसान बेतवज्जो मुझे। यही है मेरी तमन्ना, यही है आरज़ू, समझो मुझे जानो मुझे, हूँ मैं भी तुम सा ही। समझो मुझे जानो मुझे, हूँ मैं भी तुम सा ही। We need to make this world a inclusive and a inclusive place. So I guess who all are in to make this place a better place? इतने कम हाथ ऊपर आ रहे हैं, like seriously? So गए क्या सब? Cool. So the voting poll will be open for next 90 seconds and the password is 5678. कुछ प्रॉब्लम आ रही है 5 6 7 8 हाँ ये टोटल है हाँ वो दोबारा से वही आ रहा है अनन्या मैम Please wait for a while.
उसके बाद वो नहीं हो पा रहा. Please check it again. So this session has been memorable by the great and outstanding performances by our participants who have participated from different colleges in India. Now we invite on stage Sthiti and Tanya for a melodious musical performance. छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन महक जाऊंगी आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा स्वर्ग सी धरती हिल रही जैसे मेरा मन भी तो हिल रहा ऐसे कोयल की तरह गाने का अरमान मछली की तरह मचलो अरमान जवानी है लाई रंगीन सपना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा
आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा। After an enthralling performance by Siti and Tanya, I'd like to invite Ms. Chandana Hiran and Mr. Nikhil Chaudhary to share their views on this event, Tamasha by NSS, IIT Delhi. Hi everyone. Thank you so much, first of all, for honoring me and inviting me here to this wonderful event. I've been working as a digital campaigner for the last 3 years and mobilizing social change in India through campaigns on gender. Hello. Ma'am, just a minute, ma'am. Yeah? Your voice is not audible to the audience offline. So just a minute. Can you wait? Yeah. Sure. Yeah. Yeah, ma'am. Now you can speak. Yeah. Thank you. First of all, I want to thank IIT Delhi for honoring me and inviting me here to this wonderful event. I've been working as a digital campaigner for the last 3 years and mobilizing social change in India through campaigns on gender equality and inclusion. I can't listen you. In 2018, I ran a year-long campaign. I'm sorry, should I continue? Ma'am, just a minute. Can you give us just a minute? We're really sorry about the inconvenience. Just a minute. This is okay. Yeah, sure. Could you please speak again? Like just a mic check. Hello. Am I audible? Yeah. Go on. Should I continue? Yes, ma'am. Audible to everyone. Yeah. Awesome. I just wanted to say that it was absolutely amazing watching all of these plays today. I could personally relate a lot to the colorism story that the first team performed. And I just want to congratulate IIT Delhi and all of these students for bringing these conversations forward and really leaving an impact, because it's important to have these conversations. And I was just very, very happy watching these plays. And once again, thank you for inviting me here. Thank you so much. We invite Mr. Nikhil Chaudhary to share his. Hello, am I audible? Oh, yes, you are. First of all, thank you very much for inviting me and Alchemy Theatre Society on the panel today, and also bringing me virtually to the LSC once again. I've spent many years over there studying, but never thought about seeing any drama over there. Anyway, a little bit introduction about me, about myself. I am currently working in the corporate sector, but along with that, I run my own theatre society by the name of Alchemy in Bangalore, and also in Delhi, Mumbai, and Jaipur, and even Chandigarh. But why I actually initiated the theatre society is basically because of Share screen and two major audio. reasons.
One is that it definitely provides peace, and second, definitely a contribution to the society. I feel that theater is a reflection of the society, so it becomes very evident that you should be the part of some sort of a activity which can actually reflect the society, and so that you can contribute on your own. And this is where theater and cinema comes along with that. This is where the cinema and even theater has the power. Now coming to the event, I really feel that I never imagined that NSS would come up with some sort of an activity where they can collaborate with some dramatic stuff. And I really appreciate the work done by the people over there, to the team. Congratulations to them and all the entries which were sent to us. And of course, there will be some one or two winners, and there would be some other special mentions. But uh, thinking about the event, I mean, that is something which is very appreciable. For example, I never thought something that can come out of uh, a conversation like from a film like Udan or something from Friends, and this is where the creativity, has a very bigger role to play in terms of reflecting the society. And everybody has done a really good job. And of course, you can always take a feedback from me personally on acting, direction, or any sort of an efforts being done in the camera work. I am always available for you. But today we should more talk about the message which has been given through the films, and that has been really, really great. So congratulations to all the team and the people over there, even the students who are watching currently these films online. And thinking about right now, definitely thinking about watching the film in the LSC is definitely very exciting. Not in physically, but virtually also. So yeah, thanks a lot, NSSID Daily. A great event, I would say. Thank you very much. Yeah, over to the team. Now, moving further, I'd like to welcome Ananya Mohit, our NSS Seki, for the word of thanks. Hi. So before the vote of thanks, it gives me immense pleasure to announce all the awards for the day. So the best production award goes to the team Shore, which was team number 2 and was led by Mr. Nikhil Srivastava. The award for best screenplay goes to stage 2. That was team number 1 and was led by Ms. Pooja Vasudev. The award for best direction or flow goes to the Aman Theatre Society led by Rakhal Roy. The award for best acting goes to Mehnat Kash. They gave a live performance on our stage. The award for best social message goes to Fearless Hyenas, led by Disha Sehgal, and she's here offline with us today. And for the People's Choice Award, so we had voting both offline as well as online for this. And the People's Choice Award goes to Ankahi. So this team had close to 20 members, and they are from IIT Delhi itself. So I think they've brought a lot of audience to our event, and that's all. So special mention is for Sonia. It was an individual performance based on motherhood.
There are two Best Actor awards. One is for Najma, and the other Best Actor award is for the younger brother in Mehnat Kash. Now I would like to invite the judges to declare the Critics' Choice Award, the Tamasha Award. Are we able to connect with them? Oh, sorry, I'm talking to us. Actually, Nikhil sir, you're unaudible over I'm here. audible now, right now? Can you please announce? Hello, so you are audible. I'm audible? Okay. Yes. Please let me know when to speak. No, you are not. You're on mute, Ananya, I guess. So you are audible. So you're audible to everyone offline as well as online. Okay. Okay. So I would like to announce the winner based on judges' ratings, and it goes to Manakash. Congratulations, guys. On stage. The Tamasha Award winner. Can we also have I would like to invite Ishita Garg, another secretary at NSS IIT Delhi, to please present this award to fearless hyenas. This is Disha Sehgal. She's a 10th grader and she chose to participate in our competition and did really well. We also have Team Ankahi here. So this is a team from within IIT Delhi. So could you please come up on stage, Team Ankahi, all of you? I'd like to invite Khushi and Arjita, who are a part of our NSS family, to please present this award to the team.
for all the participants, as well as the other winners who joined us online as well as offline. I'd like to inform you that you'll receive certificates over mail and the prizes associated with them as well. So now I'd like for Shreya to take over. Tomorrow, so tomorrow we'll start with 404 Resolved to be held in online mode. It's a hackathon event where participants find technical solutions to problem statements relating to a social cause. This is followed by another online event, All Rise, a courtroom drama. This event will be graced by fiery arguments that aim to spread awareness about existing laws and create better informed citizens. Kaizen will also be concluded by our last event called Bazinga to be held in hybrid mode. It is a stand-up comedy event. After an exciting first round, our finalists will be performing stand-up acts related to social issues. We will be delighted by brief performances by our judges as well, both of whom are well-known stand-up comedians. Now I invite Ananya Mohit to give a vote of thanks. So we've worked really hard, my entire team, from conceptualization to this day. And I really just, I was up till late last night thinking about what will happen today. And I'm really happy to see that so many of you joined us offline as well as online. It gives me immense pleasure to be here today to be able to offer this vote of thanks to everyone. We thank all the participants for their amazing performances and the perspectives that they have given to us, our audience, as well as the judges and to the NSS team. Though it is possible that not everyone may have won today, we have, at the end of the day, learned a lot. We thank our chief guests, the director, as well as the judges, Mr. Nikhil Chaudhary and Ms. Channa Hiran, for taking out so much of their time today. I know that the event got delayed by almost an hour, and I really would like to apologize for the same. And thank you so much for joining us offline as well as online. Thank you. So as you step out of the hall, you will find this wall of change and photo booth. So please put your views on the wall of change and also get some memories along with you by clicking photos with the photo booth. Thank you so much for joining us. Also, guys, you always scan and save this QR code to go to the Kaizen website. There you'll get all the whole schedule for the Kaizen, and you can register over there too. So you all are welcome for the upcoming events, and thank you so much for joining. Also, kindly write your thoughts on the wall of change, which would be when you step out on the left side, and just click pictures on the photo booth. Thank you so much.